ओके। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अच्छा भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ और इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स और इसके फंक्शंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हम स्टार्ट करेंगे, किडनी, ठीक है। ओके, अच्छा, ये जो किडनीज हैं ये डेफिनेटली यस, यूरेटर, ओके, एंड देन यूरिनरी ब्लैडर, ओके, एंड देन यूरेथ्रा, ओके। अच्छा भाई, अब ये है कि वेट, यस, यूरेटर एंड ब्लैडर के बाद जो होता है वो यूरेथ्रा, ओके। अच्छा, अब ये है कि जो यूरेथ्रा है उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड बनाऊंगी, बिकॉज उसमें मुझे मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सिस्टम को जो है उसको भी डिफाइन करना है, ओके। यूरेथ्रा, ओके। अच्छा, ये जो यूरेथ्रा है, ब्लैडर जहाँ पे एच एंड होता है वहां पे पीछे इसके कॉर्पस ग्लैंड लगा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे इधर की तरफ जो है ये कॉर्पस ग्लैंड है, ठीक है। और इनफैक्ट प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है ये ऊपर वाला, ठीक है। ये जो है ये प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है, ठीक है। और इसके नीचे जो है छोटा सा जो लगा हुआ है एक और, वो है कॉर्पस ग्लैंड, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द यूरेथ्रा एंड सीमेन प्रोडक्शन एंड रिलीज, ये सारा इसमें होता है। सेमिनल वेसिकल, ठीक है। अच्छा जनाब, इसी के साथ यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स लगी हुई होती हैं। ये पूरा सेट जो है ना, ये बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, जिसे कहा जाए कि आपका यूरेटर को, यूरेथ्रा को, और साथ में जो है स्पर्म को हाइड्रेट करने के लिए सारी यहाँ से रिलीज होती हैं, जिसे हम कहते हैं सीमेन लिक्विड, ओके। अच्छा भाई, फिर इसके बाद जो है, यस, आउटसाइड द बॉडी टेस्टिकल्स आर प्रेजेंट, ओके, यस, okay. Testicles are present and they are present in the sac-like structure, that is the scrotum. Why they are outside the body? Because the sperm synthesis requires low temperature. That is why they are formed outside the body to provide the low temperature in the testicles. Okay. Yes. अच्छा, इसके साथ जो है सेमिनल वेसिकल, वेट, एपिडिडेमिस जो है वो अटैच हुई भी होती है, राइट। और इसी के साथ जो है स्पर्म डक्ट जो होती है वो ओरिजिनेट होती है, ओके। ये एपिडिडेमिस है, ओके। ये टेस्टिकल्स के अंदर से निकल रही है। अभी टेस्टिकल्स का, टेस्टिस का अलग से जो है स्ट्रक्चर है वो भी बना के दिखा दूंगी, ठीक है। और इससे जो स्पर्म डक्ट प्रोड्यूस हो रही है वो बेसिकली लाइक दिस, इसके पास से ऊपर से होती हुई, और फिर उसके बाद जो है इट कंबाइंस द यूरेथ्रा, ओके। अच्छा, ये इसके ऊपर से पास इसलिए होती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि इसमें टेंगल ना पड़े, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना गिठान, उलझे नहीं,
because there is no bone support or skeletal support here in this area. So ये basically क्या ऊपर से घूम के जिसे कहा जाए आती है, ठीक है, हाँ, यूरेटर में से। Yeah. फरिश्ते प्लीज ऑफ द कैमरा, लाइक दिस, ओके। ये स्पर्म डक्ट जो है ये यूरेटर के ऊपर से घूम के ऐसे लच्छे की फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से ये आती है, राइट। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे जो है ना हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि इसका रूट और पाथवे जो है वो पूरा समझ आ जाए, ठीक है। अंडरस्टैंड? Yes, sperm duct is one. Okay, so that's how it's works. Okay, and it's connect the urethra. Okay, so the passage of urine and the passage of passing the sperms in the male reproductive system, or passage of passing the gametes in the male reproductive system is same. Okay, and the urethra is the major area through which both the urine as well as the gametes are passed, and urethra is covered with muscular organ that is called the penis, and that penis has the soft spongy tissues inside it, and at the time of the copulation for the erection, these spongy tissues are filled with blood capillaries, and these blood capillaries has a high blood pressure at that time and will make the penis erect. Okay, so now I'm going to label it. Okay, yes, these are the kidneys. As we already studied them in excretion, this one is the ureter, and bladder, sperm duct, testicles, epididymis, okay, and seminal vesicle, prostate gland, corpus gland, and urethra. Okay, so that's how it's all about the male reproductive system and its labeling. Now I'm writing it: kidneys, ureter, sperm duct, bladder or urinary bladder, ठीक है। अच्छा, this one is the seminal vesicle, okay, this one is the prostate gland, and this one is the corpus gland, okay, and urethra, yes, this one is the urethra, okay, testicles, and epididymis, okay, which originates into the sperm duct. Okay, so this one is the male reproductive system. Another one important thing is the sphincter muscles. These sphincter muscles opening and closing controls the passage of urine. When the sperms are going to be passed through this route, that is through the sperm duct, these sphincter muscles got tightly packed and close the bladder. So no urine will pass during the sexual intercourse. Okay. So this one is the, yes, this one is the sphincter muscle. Sphincter muscles, okay, that controls the passage of urine. That means passing or
holding on of the urine. Okay, so we can say that this one is the male reproductive system. So I'm going to write it down something about the male reproductive system, a bit brief detail that is required for solving the past papers. Okay. Yes. So we can say that, yes, male reproductive system consists of two ovoid testes. Okay. I think so. I have labeled it. Yes, testis. Two ovoid testes. Okay. Two ovoid testes. The testis lies. They are lying outside the body in the scrotal sac in between thighs. Okay. And from the testicles or from the testes, the spiral shape cord like tube comes out, called epididymis. Okay, epididymis, and that is also called the spermatic cord. That is also called the spermatic cord. Immature sperms stores in the epididymis. Okay, epididymis ends up to form sperm duct. Okay, which goes upward to connect the urethra. Okay, at the back of the urethra, the two glands number one, prostate gland, and corpus gland are attached and responsible and secretes semen in which sperms swim sperm swims at the time of ejaculation. At the time of ejaculation in
uterus of female. Okay, understand? Yes, miss. Okay, we can say that prostate gland, gland, Cowper's gland, and seminal vesicle all collectively a slippery liquid secretes a slippery liquid called semen to number one, neutralize the urethra, number two, provide hydrated environment for sperm to survive and swim. ठीक है?